Hello viewers, how are you? In this video, we will discuss the factors determining demand. आमे एही भिडियो रे चाहिदा को निर्धारित करुवा उपादान गुड़िक विषय आलोचना करिवा. Factors determining demand. Here, the word determining, for the word determining, we can use influencing or affecting. आमे चाहिदा को निर्धारित करुवा बा प्रभावित करुवा इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग प्रभावित करुवा उपादान गुड़िक विषय आलोचना करिवा. So that means there are number of elements, there are number of factors which influence the quantity demanded of the good. पृथ्वी रे अनेक गुड़ी उपादान अच्छी जो उपादान गुड़िक गोटे द्रव्यर चाहिदा को प्रभावित करथाय बा निर्धारित करथाय. अर्थात केते गुड़ी द्रव्य को आमे अधिक क्रय करिया पई चाहुथवा बेले अधिक आमे संग्रह करिया पई चाहुथवा बेले आउ केते गुड़ी द्रव्य को आमे कम क्रय करिया पई चाहिथौ बा कम आमे संग्रह करिया पई चाहिथौ. So there are number of goods for which our demand is more, or there are number of goods for which our demand is less. That means there are number of goods which we want to purchase less, and there are some other goods which we want to purchase more. So where we demand some of the good more and some of the good less. So there are number of factors which determine this demand. केते गुड़ी उपादान बा बहु गुड़ी उपादान अच्छी जो उपादान गुड़ी को द्रव्यर चाहिदा को ह्रास किंबा वृद्धि करिथाय. And here we will discuss these elements, and these elements are expressed in a functional relation. एवं एही उपादान गुड़ी को एक फलन संबंध माध्यम रे आमे प्रकाश करियोछु जहा को आमे चाहिदा फलन बोली कहिथाउ. And this relationship is expressed in a demand function in a functional form, and this function is called demand function. Here we have already studied function. Function means बा फलन संबंध रे दुईटी उपादान विषय आमे संबंध को आमे व्याख्या करिथाउ. Here we have taken the demand function. Demand function is written like this: dx is a function of px, py, pz, t, g, n and y. dx बा dx, d means demand, dx कहले d रो अर्थ होची चाहिदा एवं x होची गोटी द्रव्य. अर्थात dx means x is a good, dx means demand of good x. Then f means functional relation फलन संबंध, functional relation फलन संबंध. Then px means price of good x. px माने कण px माने होची द्रव्यर दर बा x द्रव्यर दर. आमे x बोली एठारे गोटे द्रव्य बोली नै गछु एवं x द्रव्यर दर को आमे px बोली लेछु. Then आमे एठारे तीनोटी द्रव्य नेइछु x y and z एवं तांकर दर को केमति लिखिबा px py and pz. So then px means price of good x वा x द्रव्यर दर को px बोली नेइछु. सेही परि आमे x द्रव्यर सहित संपर्क थिबा आउ दुईटी द्रव्य y और z. x द्रव्य सहित संपर्क थिबा आउ दुईटी द्रव्य आमे नेइछु y और z. तेणु आमे py और pz को आमे किभଳି लिखिबा py and pz को आमे प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स संपर्कित द्रव्यर दर बोली आमे नै जाउछु. उदाहरण स्वरूप चा और कॉफी दुईटी संपर्कित द्रव्य अटे. टी एंड कॉफी आर टू रिलेटेड गुड्स. So that is why then car and petrol are two related goods. That is why their price is called prices of the related goods. So here py pz is written as prices of related goods. संपर्कित द्रव्यर दर संपर्कित बा x द्रव्य सहित संपर्क थिबा द्रव्यर दर को आमे py pz बोली नेछु. सेही परि t means t माने कोन नेछु आमे टेस्ट एंड प्रेफरेंस रुचि और आग्रह. G means गवर्नमेंट पॉलिसी सरकारंकर नीति. N means पॉपुलेशन जनसंख्या. Y means इनकम ऑफ द कंज्यूमर उपभोक्तांकर आय. आउ बहु गुडे उपादान अछि. आमे एति उपादान एठी आमे लिखिछु बा. हियर वी हैव देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स
there are large number of elements which influence the demand of the good, but here we mention these elements. But we will discuss another some of the another elements. आमे किंतु आलोचना करा समय रे आउ केते गुडी अधिक उपादान गुडी का विषय मध्ये आलोचना करिवा, किंतु म एठारे एते गुडी उपादान को लिखिछि। अर्थात एक्स द्रव्यर चाहिदा एही उपादान गुडी का ऊपर निर्भर करि थाए। That means the demand of good X depend on these elements. That means अर्थात एक्स द्रव्यर चाहिदा द्रव्यर दर संपर्कित द्रव्यर दर सरकार नीति रुचि और आग्रह जनसंख्या उपभोक्तांकर आय यही उपादान गुड़िक उपरे निर्भर करि थाए। सो व्हाट इज द डिमांड, देन व्हाट इज द डिमांड फंक्शन। ताहले हमें चाहिदा फलन काहा कहिबा, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ द गुड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। द्रव्यर चाहिदा एवं चाहिदा को प्रभावित करुथुबा उपादान गुड़िक मध्यरे थिबा फलन संबंध को चाहिदा फलन बोली कहा जाए। सो हियर we will discuss one by one how these elements influence the quantity demanded of the good. We will discuss one by one. आमे एही उपादान गुड़िक किभली भाबरे द्रव्यर चाहिदा को प्रभावित करि थांती आमे गोटे परे गोटे आलोचना करिबा। सो द फर्स्ट वन वी विल डिस्कस द प्राइस ऑफ द गुड। आमे द्रव्यर दर चाहिदा को किभली भाबरे प्रभावित करि थाए आमे आलोचना करिबा। फर्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आमे प्रथम आलोचना करिबा प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड द्रव्यर दर। द्रव्यर दर रे परिवर्तन हेले चाहिदारे द्रव्यर चाहिदारे परिवर्तन घटिताए। सो व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। That means when the price of the good increases or decreases, the demand also decreases or increases. So that means when the price of the good increases, the demand decreases. When the price of the good increase, when price increase, price rise, demand fall. द्रव्यर दर वृद्धि ले उपभोक्ता से द्रव्य कम क्रय करिया पई चाहि थांती। एंड व्हेन प्राइस ऑफ द गुड फॉल डिमांड राइज। अर्थात द्रव्यर दर वृद्धि ले चाहिदा ह्रास पाए एवं द्रव्यर दर ह्रास हेले चाहिदा वृद्धि पाई थाए। दैट मीन्स द कंज्यूमर वांटेड टू परचेज less at a higher price and he wanted to purchase more at a lower price. उपभोक्ता कम दर रे अधिक क्रय करिया पई चाहुथुवा बेले अधिक दर रे कम क्रय करिया पई चाहि थांती। तेणु द्रव्यर दर एवं चाहिदा मध्यरे विपरीत ऋणात्मक संपर्क रही अछि। सो हियर वी कैन फाइंड दैट there is a negative relationship between price of the good, price and demand. Price of the good and demand are negatively related. एमान को मध्य की संपर्क रही अछि विपरीत opposite negative opposite or negative indirect relationship between the price of the good and demand. द्रव्यर दर एवं चाहिदा मध्यरे विपरीत ऋणात्मक बा परोक्ष संपर्क रही अछि। ए तीनोटी शब्द समान भाव आम एठारे व्यवहार करि परिबा किंतु तार अर्थ अलग अलग है। ओपोजिट माने विपरीत संपर्क, ऋणात्मक नेगेटिव रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। सो हियर first I will explain you what is the negative relation and what is the positive relation. ऋणात्मक संपर्क आमे काहा कहिबा एवं आमे धनात्मक संपर्क आमे काहा कहिबा आमे आलोचना करिबा एठारे।
फर्स्ट हला हमें नेगेटिव रिलेशन विषय कहि दउची फॉर एग्जांपल व्हेन both the variables move in the same direction it is called पॉजिटिव रिलेशन पॉजिटिव बा धनात्मक संपर्क काह कहबा पॉजिटिव रिलेशन सपोज x and y are two variable when x rise y also rise अर्थात सपोज धनात्मक संपर्क में काह कहबा x और y दुईटी चल बा दुईटी उपादान x वृद्धि हेले y मध्य वृद्धि पाई थाए x वृद्धि हेले y मध्य वृद्धि पाई थाए फॉर एग्जांपल x जदि वृद्धि हला 1 2 3 4 5 आइडा वृद्धि हला 10 20 30 40 50 एमती वृद्धि हला एटा कोन कहबा एटा कहबा धनात्मक संपर्क बोली कहबा सो व्हेन x rise y also rise और व्हेन x falls y also falls जदि x जदि ह्रास हला x जदि ह्रास हला y मध्य ह्रास पाई थाए ताहले कोन दुईटा एक ह्रास पाउछ दैट मींस दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन और both the variable move in the same direction उभय चल गोटे दिगरे माने गति करछंती गोटे वृद्धि ले आ गोटे वृद्धि पाउछ याकू कहबा हमें पॉजिटिव रिलेशन बोली कहबा बट नेगेटिव रिलेशन काहू कहबा नेगेटिव रिलेशन कहबा x और y जदी दुईटी चल x जदी वृद्धि हेला x जदी राइज कला y कोन करतबो फॉल करतबो when x rise y fall जदी एटा और कोन लिखिबा एटा यदि फॉल करूतबो x जदि फॉल करतबो एटा कोन होतबो राइज होतबो दैट मींस व्हेन x राइज y फॉल और व्हेन x फॉल y राइज x जदि वृद्धि पाउतबो y ह्रास पाउतबो x जदि ह्रास होतबो एटा वृद्धि पाउतबो अर्थात both the variables are move in the opposite direction उभय राशि विपरीत दिगरे गति करथिबे देखो पिले एठारे एरो मार मु गुटे साइड रे देछि किंतु एठारे एरो मार अलग अलग साइड रे देछि when x rise y fall एटा वृद्धि हेले एटा ह्रास पाउछि एटा ह्रास हेले एटा वृद्धि पाउछि दैट मींस एटा यदि 1 2 3 4 5 होछि एटा हला 50 40 30 20 10 गुटे वृद्धि हला माने गुटे ह्रास पाउछि दैट मींस both are moving in the opposite direction ए माने ऑपोजिट बा विपरीत दिगरे गति करछंती एटा को हमें कोन कहबा नेगेटिव रिलेशन बोली कहबा बा इनडायरेक्ट रिलेशन बोली कहबा सो हियर द डिमांड एंड प्राइस एंड डिमांड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देखो पिले ऊपर देखो when price rise demand fall द्रव्यर दर वृद्धि हेले चाहिदा ह्रास पाई थाए एवं द्रव्यर दर ह्रास हेले चाहिदा वृद्धि पाए दैट मींस प्राइस एंड डिमांड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन उभय दर एवं चाहिदा विपरीत दिगरे गति करछंती दर वृद्धि हेले दर मेरु मार्क पर दोछि दर वृद्धि हेले चाहिदा ह्रास पाउछि और दर ह्रास हेले चाहिदा वृद्धि पाउछि अर्थात उभय राशि विपरीत दिगरे गति करछंती तेणु आमे कोन जानले द्रव्यर दर वृद्धि हेले चाहिदा ह्रास पाउछि द्रव्यर दर ह्रास हेले चाहिदा वृद्धि पाउछि दैट मींस द प्राइस ऑफ द गुड डिटरमिन्स द डिमांड ऑफ द गुड व्हेन प्राइस चेंजेस डिमांड चेंजेस व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज so that is why there is a negative relationship between these two variables or two elements then second one is income of the consumer second one is income of the consumer income of the consumer उपभोक्तांकर आय income of the consumer the income of the consumer the change in the income of the consumer also influence the quantity demanded of the good उपभोक्तांकर आय रे परिवर्तन हेले मध्य चाहिदा रे परिवर्तन घटी थाए so
when and here we will discuss two type of good आम एठारे दुई प्रकार द्रव्य विषय आम आलोचना करवा गोटे है सुपरियर गुड आउ गोटे है इनफेरियर गुड सुपरियर गुड बा उत्कृष्ट द्रव्य आउ गोटे है इनफेरियर INFERIOR इनफेरियर गुड बा निकृष्ट द्रव्य आम सुपरियर गुड क्या कहवा बा उत्कृष्ट द्रव्य जो द्रव्य गुड़िक अधिक परिमाण रे विटामिन्स रही है से गुड़ी आम उत्कृष्ट दैट मीन्स दोज गुड व्हिच पोजेस rich amount of vitamins or higher amount of vitamins are called superior good. For example, fish, meat, egg. तार example कौन होगा बोले egg, fish, milk. ये द्रव्य गुड़ी कौन superior good कहना और meat. Then आउ गोटे है inferior goods जो द्रव्य गुड़िकर ভিটামিন যে দ্রব্য গুড়িকরে ভিটামিনর পরিমাণ কম রয়েছে বা কার্বোহাইড্রেট বেশি রয়েছে শর্করা বেশি রয়েছে কিন্তু ভিটামিনস শর্করা বেশি রয়েছে এবং ভিটামিনস কম রয়েছে তাকে আমি নিকৃষ্ট দ্রব্য বলি কহবা দোজ গুডস হুইচ পজেস less amount of vitamins but higher amount of carbohydrates are called inferior goods. For example, bread, then potato, आलू पाउरुटी यही द्रव्य गुड़िक क्यों द्रव्य बोली कह जाए द्रव्य गुड़ी को इनफेरियर गुड्स बा निकृष्ट द्रव्य बोली कह जाए सो व्हाट हैपेन टू दिज गुड्स टू द डिमांड ऑफ दिज गुड्स व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस तेणु द्रव्य तेणु उपभोक्तांकर आय परिवर्तन हेले यही द्रव्य गुड़िकर चाहिदारे मध्य परिवर्तन घटी थाए किंतु भिन्न आकार परिवर्तन घटी थाए सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द superior good when the income changes when the income increases or decreases what happen to the demand of superior goods जदि उपभोक्तांकर आय रे वृद्धि किंवा ह्रास हेले उत्कृष्ट द्रव्यर चाहिदारे कौन परिवर्तन होता है देखा when the income of the consumer increases the demand of superior good will increase जेतेबेले उपभोक्तांकर आय रे वृद्धि होता है उपभोक्तांकर आय वृद्धि पाई थाए से समय रे सुपरियर गुड्स बा उत्कृष्ट द्रव्यर चाहिदा मध्य वृद्धि पाई थाए राइज द डिमांड राइज दैट मीन्स व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस the demand of superior good also increase that means there is a direct relationship between the income and demand of the superior goods क्षेत्र रे दर आय एवं इनकम आय एवं चाहिदा मध्य रे प्रत्यक्ष संपर्क रही अछि कोन संपर्क रही अछि डायरेक्ट दैट मीन्स व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स आल्सो इंक्रीज एंड व्हेन द इनकम डिक्रीजेस द डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स आल्सो डिक्रीज अर्थात आय लोक मानकर आय वृद्धि हेले से मानकर माछ मांस अंडार चाहिदा से मानक पई माछ मांस अंडार चाहिदा मध्य वृद्धि पाई थाए that means when the income of the consumer increases the demand for fish meat egg increase but when their income decreases the demand of fish milk egg meat decreases so there is a direct relationship between income of the consumer and the demand of superior good but in case of inferior goods आमे निकृष्ट द्रव्य विषय कौन हो देखा जे लोक मानकर आय वृद्धि हेले लोकमानकर आय वृद्धि हेले निकृष्ट द्रव्यर चाहिदा ह्रास पाई थाए दैट मीन व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस देयर डिमांड फॉर इनफेरियर गुड्स डिक्रीज अर्थात लोकमानकर आय वृद्धि हेले व्हेन द इनकम राइज द डिमांड ऑफ इनफेरियर गुड्स फॉल अर्थात लोकमानकर आय वृद्धि हेले सेमानकर पाउरुटी पोटाटो बा आलू चाहिदा सेमानक पाई ह्रास पाई थाए बट द व्हेन इनकम फॉल द डिमांड फॉर दिज गुड्स राइज किंतु जे सेमानकर आय ह्रास होला ताहेले एही द्रव्य बा इनफेरियर गुड्स चाहिदा सेमानक पाई वृद्धि पाई थाए सो दिस इज आल्सो पुट फॉरवर्ड बाय जिफेन गोटे अर्थशास्त्री अछंती सार रॉबर्ट जिफेन
ସାର୍ ରୋବର୍ଟ ଜିଫେନ୍ এই বিষয়ে সর্বপ্রথমে কি আলোচনা করলে যে নিকৃষ্ট দ্রব্য ক্ষেত্রে দ্রব্য লোকমানଙ୍କର আয় এবং চাহিদা ମଧ୍ୟରେ বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। এই বিষয়ে সর্বপ্রথমে ସାର୍ ରୋବର୍ଟ ଜିଫେନ୍ ସାର୍ ROBERT ସାର୍ ରୋବର୍ଟ ଜିଫେନ୍ ସେ ଜଣେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। in the 19th century ସେ ঊনবিଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ in the 19th century Sir Robert Giffen for the first time in the 19th century discussed this relationship between the income and the demand for inferior goods, and he found that there is a indirect relationship between the income of the consumer and the demand for inferior goods। ଏବଂ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ହ୍ରାସ ହେଲେ ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। He found that when the income of the consumer is increasing, the demand for inferior goods is decreasing, but when the income is decreasing, the demand for inferior goods is increasing. So there is an indirect relationship between income of the consumer and the demand for inferior goods.